Hello my dear student. Today we will discuss important video about the equivalent capacitance. When a capacitor of separation D filled with dielectric constant K1 and K2 for half distance D by 2 and this half distance D by 2 and this total distance is D. Now distance divided, and if this plate is given a positive charge, then this side negative, this side positive, this side negative. It means these two capacitors are in series, and the value of C1 equal to K1 epsilon naught A upon D by 2. Now this shift 2 into numerator, so 2 K1 epsilon naught A upon में D. The value of C2 2 K2 epsilon naught A upon में D. Now these two capacitors are in series. So 1 upon C equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2. अब C1 C2 की वैल्यू पुट करिए यहाँ पर 2 K1 epsilon naught A और D शिफ्ट इनटू न्यूमरेटर. ऐसे यहाँ पर D upon 2 K2 epsilon naught A. Now D upon 2 epsilon naught A कॉमन टर्म आ गई 1 upon K1 plus 1 upon K2. तो 1 upon C equal to D upon 2 epsilon naught A ब्रैकेट एलसीएम K1 और K2 एलसीएम हो गया. न्यूमरेटर में टर्म आ गई K2 plus K1. Now do the reciprocal. तो 2 epsilon naught A upon D K1 K2 upon में K1 plus K2. This is the answer. अब if they ask what is the equivalent dielectric constant, so equivalent dielectric constant K equal to 2 K1 K2 upon में K1 plus K2 be the equivalent dielectric constant. Now question number second. What is the equivalent capacitance when a capacitor filled with dielectric constant K1 and K2? Now in this case area is divided into two parts. Area A by 2 and A by 2 while separation remains the same. So these two plates are in parallel because positive on one side and negative is on the other side. Negative of both the capacitors are on one side and positive on one side. So these are in parallel. So C1 equal to K1 epsilon naught A by 2 upon में D. वैल्यू हो गई K1 epsilon naught A upon में 2D और C2 की वैल्यू K2 epsilon naught A upon में 2D. Now the equivalent capacitance C1 plus C2. C1 और C2 की वैल्यू पुट करें K1 epsilon naught A upon 2D plus K2 epsilon naught A upon में 2D. Now epsilon naught A upon में 2D कॉमन, so ब्रैकेट में टर्म आ गई K1 plus K2. So the equivalent capacitance हो गया K1 plus K2 epsilon naught A upon यहाँ पर 2 और into D. And equivalent dielectric constant will be equal to K1 plus K2 upon में 2. Now question number third. What is equivalent capacitance? Now in this case in D by 3 dielectric constant is filled and in 2D by 3 air is placed. So there are two methods in this case. So this is also in series because positive of one plate on one side, negative on other side, positive on one other this side, or it again negative. Positive, negative, positive, negative. It means this is in series. So the value of C1 equal to K1 epsilon naught A upon में D by 3. Now we shift this 3 in numerator, 3 K1 epsilon naught A upon में D. C2 epsilon naught A upon में 2D upon में 3. तो टर्म आ गई 3 epsilon naught A upon में 2D. Now this is series.
So equivalent capacitance 1 upon C1 plus 1 upon C2. Now put the value of C1 and C2. 3K1 epsilon नॉट A और ये D शिफ्ट हुआ न्यूमरेटर में प्लस यहाँ पर लिखेंगे 2D अपॉन में 3 epsilon नॉट A. अब D अपॉन में epsilon नॉट A कॉमन टर्म आ गई 1 अपॉन 3K1 प्लस 2 अपॉन में 3. नाउ D अपॉन में epsilon नॉट A. अब एलसीएम 3K1 यहाँ पर टर्म आ गई 3 प्लस 2K1. Now do the reciprocal. So when we do the reciprocal, then we get 3K1 upon में 3 plus 2K1 और epsilon naught A upon D is the equivalent capacitance of this capacitor. Now, question number 4. What is equivalent capacitance? Now in A by 3 area, K1 next A by 3 area, K2 next A by 3 area, K3. And when area divided, then these capacitors are connected in parallel. Equivalent capacitance of first one is K1 epsilon naught A upon में अब 3 शिफ्ट हो गया न्यू इन डिनोमिनेटर. C2 इक्वल टू K2 epsilon naught A by 3 का 3 हमने शिफ्ट कर दिया इन डिनोमिनेटर और C3 इक्वल टू K3 epsilon naught A upon में 3D. Now equivalent capacitance equal to C1 plus C2 plus C3. The value of C1 is K1 epsilon naught A upon 3D plus K2 epsilon naught A upon में 3D plus K3 epsilon naught A upon में 3D. Epsilon naught A upon 3D common. So bracket में K1 plus K2 plus K3. This is the equivalent कैपेसिटेंस. अगर आपसे बोला जाए इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो K1 प्लस K2 प्लस K3 अपॉन 3 मीन्स अगर पूछे यहाँ पर व्हाट इज द इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो ये वैल्यू हो गई K1 प्लस K2 प्लस K3 अपॉन 3. इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीन्स अगर हम तीनों के प्लेस पर एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल करें तो उसका फॉर्मूला हो गया K1 प्लस K2 प्लस K3 अपॉन 3.